Good morning students. So today I will teach you a new topic, that is cardiac tamponade. So before starting the topic, that is cardiac tamponade, I will teach you something about the layers of the heart. So first of all, layers of the heart. Heart comprises of three layers. First one is endocardium, that is inner layer. Second one is myocardium, that is middle layer, and outer and third layer is pericardium. So here we will talk about the pericardium. So pericardium, it is the membranous sac surrounding the human heart. There is about normally 20 to 50 ml pericardial fluid in the pericardial cavity. So pericardium, it is the outer layer of the pericardium. At it encloses, means it covers the heart and the normal fluid which is present in the pericardial cavity, that is 20 to 50 ml. And in this disease the pericardial fluid amount is increased, means जो normal amount है pericardial fluid का वो amount increase हो जाता है. So next one is introduction. Cardiac tamponade, it is a serious medical condition in which blood or fluid fill the space between the sac that encases the heart and the heart muscles. This place extreme pressure on your heart. The pressure prevents the heart's ventricle from expanding fully and keeps your heart from functioning properly. Your heart can't pump enough blood to the rest of the body. When this happens, this can lead to the organ failure, shock, and even death. So, cardiac tamponade, it is a condition in which the fluid which is present inside the pericardial sac, means pericardial cavity, the fluid amount is gradually increases. So that's why when the fluid volume increases in the pericardial cavity, it causes the pressure to the ventricles of the chamber of the heart, and that's the result in the chamber doesn't fully expand or doesn't fully contract or relax. सो कार्डियक टैम्पोनेट ये एक ऐसा कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें जो फ्लूइड है, नॉर्मली जैसे हमने देखा कि नॉर्मल कितना होता है उसमें 20 to 50 ml, लेकिन यहाँ पे 20 to 50 ml जो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड है उससे ज़्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी में एक्यूमुलेट होने लगता है. तो ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर पेरिकार्डियल कैविटी में एक्सेस अमाउंट होगा फ्लूइड का, तो वो जो हार्ट की जो चैम्बर्स हैं उसको एक्सपेल्ड आउट करेगा, उनकी तरफ प्रेशर लगाएगा, प्रेशर अराइज करेगा, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा और ना ही वो फुली एक्सपैंड हो पाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट आई विल कम टू द डेफिनेशन. Look in this picture. First one is healthy heart and another side is cardiac tamponade. अब जैसे कि पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं जो ब्लैक कलर से जो डिनोट है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी. नेक्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हैं कार्डियक टैम्पोनेड में जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से वो वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम मीन्स जो हार्ट के चैम्बर्स है उनके ऊपर प्रेशर अराइज कर रहा है. तो सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्डियक टैम्पोनेड. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. Cardiac tamponade, it is a life-threatening condition caused by excess fluid accumulation in the protective sac, that is pericardium, around the heart. The fluid exerts pressure on the heart and impairs its ability to pump the blood. Another definition, that is cardiac tamponade is a clinical syndrome caused by the accumulation of fluid in the pericardial space, resulting in reduced ventricular filling and subsequent hemodynamic compromise. Third definition is cardiac tamponade, it is the accumulation of fluid around the heart muscle which place excess pressure on this organ. So overall the meaning of the cardiac tamponade, that it is the accumulation of the excess fluid inside the pericardial cavity and which cause the pressure in the heart chambers.
Next is cause. So there are some causes of cardiac tamponade. First one is any type of connective tissue disease like lupus systematic erythematous, which is a connective tissue disorder. If it is present in the patient body, so it will destroy the muscles of the heart. Next one is rheumatoid arthritis or any type of rheumatic disease will also cause the infection and destroy and damage the muscles of the heart. Next one is dermatomyositis. It is also an inflammatory disease marked by the muscle weakness and skin rashes. If this muscle weakening arises in the pericardial layer, so it will cause the accumulation of the fluid in the pericardial cavity. Next one is genetic muscle degeneration disease. Sometimes if person having autoimmune disease like genetic muscle degeneration disease, so patient will have the degeneration of heart muscles. Next one is aortic dissection. Sometime of aortic dissection, it causes penetration in or hole in the pericardium cavity. Next one is any type of bacterial infection like pericarditis, myocarditis, endocarditis, which cause inflammation in the pericardial cavity and increase the cell permeability and fluid accumulation inside the pericardial cavity. Next one is tuberculosis, any type of pulmonary infection which can also lead to the damage of the heart muscles and further lead to the pericardial effusion. Effusion, here the meaning of effusion word is accumulation of the fluid. Next one is any type of heart attack or person having any type of heart disease. Infection that affect the heart, like I have already told you, and in the any type of bacterial infections or infection related to heart like pericarditis, myocarditis, endocarditis, bacterial endocarditis. So these all are the infection that affect the heart or any inflammatory or infectious disease of the heart. Next one is kidney failure. If patient having kidney failure, so there is the retention of fluid inside the body, and which fluid is accumulated in the pericardial cavity. नेक्स्ट वन इज गन शॉट और एनी टाइप ऑफ स्टेप वुंड. स्टेप का मतलब होता है चुभना, मतलब किसी भी तरह का चुभने वाला ऐसा कोई वुंड. सो गन शॉट और स्टेप वुंड इन द चेस्ट. ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट फ्रॉम अ कार और एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट. ब्लंट मीन्स धारदार और शार्प. किसी भी शार्प स्टूडेंट से अगर चेस्ट में पेनिट्रेशन हो गया, होल हो गया, उसकी वजह से भी पेरिकार्डियम की जो लेयर्स है उसमें होल हो जाता है और जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है. एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंटल परफोरेशन आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन, एंजियोग्राफी और इंसर्शन ऑफ अ पेसमेकर ड्यूरिंग द एनी टाइप ऑफ surgery or sometimes following the cardiac catheterization, angiography, insertion of a pacemaker, sometimes there is perforation means hole. So sometimes it cause hole or penetration in the pericardial cavity and which cause accumulation of the pericardial fluid. Next one is puncture or penetration or hole, these all are the same. So puncture made during the placement of a central line, which is a type of catheter that administer fluid or the medication. Same like cardiac catheterization, the also during the placement of a central line, if puncture caused, so it will leads to the pericardial effusion. Next one is cancer that is spread to the pericardial sac such as breast or lung cancer. Sometimes it also damages the muscles of the heart. A rupture aortic aneurysm, I have already told you in earlier classes about the aneurysm. So here if the aneurysm is in big size, so it will rupture and it will cause the accumulation of the fluid in the pericardial cavity. Pericarditis, any type of inflammation in the pericardium. Lupus, that is connective tissue disorder. High level of radiation to the
chest. Next one is hypothyroidism, sometime due to any type of hormonal disease. It also called the various type of hormonal imbalance, and patient having symptoms of renal failure, or patient having symptoms of ascites, any type of edema which cause excess accumulation of the fluid in the body, and also having water overload. So it will also cause the accumulation of fluid in the pericardial cavity. So next one is pathophysiology. So in pathophysiology, firstly we will see the three phases. First one is the accumulation of pericardial fluid impair the relaxation and filling of the ventricles, requiring a higher filling pressure. During this phase, the left and right ventricular filling pressure are higher than the intrapericardial pressure. सो फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या होता है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को और वेंट्रिकल्स में ब्लड की फीलिंग होने को इम्पेयर यानी कि इनिबिट करता है, रोकता है. एंड इसके लिए पेरिकार्डियम के अंदर बहुत ज़्यादा हायर प्रेशर होना चाहिए. सो ड्यूरिंग दिस फेज, तो इस फेज के दौरान क्या होता है, द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग प्रेशर आर हायर देन द इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर. लेकिन अभी जस्ट क्या है, पेरिकार्डियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए. और दूसरी चीज़ क्या है कि उस जैसे जैसे फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर कम होता जाएगा और पेरिकार्डियल फ्लूइड का, पेरिकार्डियम के अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, ये चीज़ नहीं हो पाती है. क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल्स के अंदर में जो प्रेशर है वो किस प्रेशर से ज़्यादा है, प्रेशर इन द पेरिकार्डियल कैविटी. नेक्स्ट फेज 2 विथ फर्दर फ्लूइड एक्यूमुलेशन. अगर ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन कंटिन्यूअस है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, सो द पेरिकार्डियल प्रेशर इंक्रीज अबव द वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर रिजल्टिंग इन रिड्यूस कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट क्या होगा, इसकी वजह से एक सेकेंड स्टेज में अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया. सो द प्रेशर इनसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी इंक्रीज अबव द वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर. अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया. सो रिजल्टिंग इन रिड्यूस कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट कैसे रिड्यूस होगा, अगर पेरिकार्डियल स्पेस में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा प्रेशर अराइज करेंगे. किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अराइज करेंगे, वेंट्रिकल्स के ऊपर. तो वेंट्रिकल जो है प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे. प्रॉपरली एक्सपेंड अगर नहीं होंगे तो प्रॉपर ब्लड की फीलिंग उसमें नहीं होगी. सफिशिएंट ब्लड की फीलिंग नहीं होगी तो ब्लड की सप्लाई कम होगी, इसलिए कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा. सो नेक्स्ट वन इज फेज 3, अ फर्दर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. अगर ये कार्डियक आउटपुट कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है, सो विच इज ड्यू टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द पेरिकार्डियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग प्रेशर. जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो प्रेशर है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है दोनों इक्वल हो जाता है. सो the pathophysiology, in the pathophysiology, first one is due to etiological factor, any type of heart disease, infection, inflammation, any type of patient having renal failure, heart disease, heart attack, any type of connective tissue, genetic disorder, muscular degeneration, it will cause the blood or fluid collect in the pericardium. Next, it causes the increased pressure inside the pericardial cavity, which is higher than the pressure in the ventricles. Next, that will prevent the heart ventricles from expanding fully. इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है वो सफिशिएंट जो उनका वॉल्यूम है उसमें एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं. एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द फ्लूइड प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम द फंक्शनिंग. इसकी वजह से हार्ट क्या है, सफिशिएंट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है. सो बॉडी डजंट गेट द इनफ ब्लड. इसकी वजह से बॉडी को इनफ ब्लड की सप्लाई नहीं होगी. साथ ही साथ देयर विल बी डिक्रीज इन द सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी. सो दीज ऑल आर अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. नेक्स्ट आई विल कम टू द clinical features. So first clinical feature, that is anxiety, restlessness, patient having low blood pressure, weakness, chest pain radiating to neck, shoulder and back, trouble in breathing, taking deep breaths,
that is also called labor breathing. Rapid breathing, discomfort that is relieved by the seating or leaning forward. Fainting that is called syncope. Dizziness, loss of consciousness. Here the three main sign that is called back triad. This is the important key sign of the cardiac tamponade. So first sign is low blood pressure and weak pulse, because the volume of blood of your heart is pumping is reduced. Second one is extended neck vein, that is jugular vein. So here the jugular vein is extended. Next one is rapid heartbeat. Rapid heartbeat, it combined with muffled heart sound due to the expanding layer of the fluid inside the पेरिकार्डियम. तो पहली चीज़ क्या है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो रहेगा. दूसरी चीज़ क्या है, पल्स बहुत ही वीक मिलेगी. एक्सटेंडेड नेक वेन्स, यानी कि जुगुलर वेन्स हैं वो एक्सटेंडेड रहेंगे, उभरे हुए दिखेंगे. एंड पेशेंट हैविंग रैपिड हार्ट बीट, that is called tachycardia. So these are the clinical features. So next is diagnostic evaluation. In diagnostic before performing the diagnostic evaluation, firstly we will take the history of the patient. And in history में सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, पेशेंट को. इफ़ पेशेंट हैविंग एनी टाइप ऑफ हार्ट डिसीज, इफ़ पेशेंट हैविंग एनी टाइप ऑफ ऑटो इम्यून और जेनेटिक मस्कुलर डीजनरेशन डिसीज, इफ़ पेशेंट हैविंग एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इफ़ पेशेंट हैविंग एनी टाइप ऑफ डिसीज लाइक किडनी फेलियर or any type of thyroid dysfunction. So we take all the history about all type of risk factor which will cause the cardiac tamponade. Next we will take the history about the any type of medical history related to heart and other system. So next one is physical examination. After take the history of the patient, we will perform the physical examination. In the physical examination there are some key point which will keep in mind while performing the physical examination of the patient of the cardiac tamponade. So first one is blood pressure that falls when the breathing is deeply, means when a patient take deep breath, his or her blood pressure falls, means patient having low blood pressure. Second one is rapid breathing, that is called bradycardia. Next one is heart rate over the 100, heart rate over the 100. नेक्स्ट वन इज हार्ट साउंड आर ओनली हियर थ्रू अ स्टेथोस्कोप. नॉर्मली हम पेशेंट का हार्ट साउंड नहीं सुन सकते हैं. क्यों? क्योंकि पेशेंट की हार्ट साउंड हमको बहुत ही क्वाइट, यानी कि बहुत ही धीमी और दबी हुई सुनाई देगी. नेक वेन दैट मे बी बल्जिंग, मीन्स यहाँ पे नेक वेन जो है जुगुलर वेन्स दे आर डिस्टेंडेड. वीक और एब्सेंट पेरीफेरल पल्स, अगर हम हार्ट बीट एपेक्स की जो बीट है, मतलब कि स्टेथोस्कोप से जब हम हार्ट बीट सुनते हैं, उसके अलावा अगर हम पेरीफेरल पल्सेस चेक करेंगे, हैंड में पेशेंट के पल्सेस चेक करेंगे, फीमोरल पल्स चेक करेंगे, जितने भी पल्स के अदर साइड्स अगर हम वहाँ पे पल्स चेक करते हैं तो हमको जो पल्स है वो कम मिलेगी या फिर एब्सेंट मिलेगी. नेक्स्ट वन इज अदर diagnostic evaluation. First one is electrocardiogram. This test allow the doctor to examine the electrical activity of the heart. Second one is computerized tomography scanning to confirm the presence of any extra fluid in the pericardium fluid. Magnetic resonance angiogram, it use the magnetic field to detect the any type of abnormality in how the blood flow through the blood vessels of the heart. Next one is echocardiogram, provide a sound waves or detailed image of the heart. Next one is chest x-ray, and chest x-ray of the chest show if heart is abnormally large on an unusual shape due to the fluid buildup. Here the diagram of the chest x-ray, इसमें आप देख सकते हैं जो ये एक्सरे में जो लंग्स का जो पार्ट है वो टोटल वाइट हो गया है. तो ये क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हुआ है. सो दिस इज द एक्सरे दैट डेमोन्स्ट्रेटिंग द accumulation of fluid inside the pericardium cavity. Next one is management. Firstly, we provide the drug to improve the heart function and reduce the blood pressure. So next one is bed rest with the leg elevated. So we will improve the venous return of the patient.
Third, fluid are given to keep the blood pressure normal until the fluid can be drained from around the heart. Next one is oxygen may be also administered to reduce the workload of the heart by decreasing the tissue demand for the blood flow. Next one is there are 3 types of the procedure that is performed by the doctors. First one is pericardiocentesis, that means removal of the fluid from the pericardium using a needle. इसमें क्या करते हैं, पेरिकार्डियम से जो फ्लूइड है उसको रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट वन इज पेरिकार्डियक्टॉमी, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम टू रिलीव द प्रेशर ऑन द हार्ट. अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कि इन सपोज इन केस ऑफ पेरिकार्डाइटिस, इफ पेशेंट हैविंग inflamed pericardial layer, so we will remove the part of the inflamed pericardium to relieve the pressure on the heart. Third one is thoracotomy, a surgical procedure which allow the draining of the blood or blood clot around the heart. So here in this picture, this is the pericardial space and this is the pericardium. A needle is inserted to remove the fluid. Next one is nursing management. So first nursing diagnosis is ineffective breathing pattern related to hyperventilation. So for this nursing diagnosis, firstly we will do monitoring strictly vital signs, especially the respiratory frequency, monitor the breathing, chest expansion, regularity of breathing, if patient having mouth breathing or not, give the semipolar position if not not contraindicated by the physician, teach the client to take a deep breath, give oxygen as indicated, give the medications, monitor the pulse oximetry, monitor the pulse with the help of pulse oximetry, and during also manual BP reading. Monitor the urine output hourly. A drop in any type of urine output may indicate the decreased renal perfusion as a result of decreased stroke volume and secondary to the cardiac compression. Next nursing diagnosis, that is decreased cardiac output related to reduced ventricular filling secondary to increased intrapericardial pressure. So for this nursing diagnosis we will continuously monitor the ECG to assess the any type of arrhythmia. Second, monitor the BP for every 5 to 15 minutes during the acute phase of the cardiac tamponade. Note the color, presence and quality of the note the presence and quality of the pulse. Here the mistake, that is color, not color, only presence and quality of the pulse. Auscultating the breath sound and heart sound and listen to the murmur if there is any type of murmur is present, like S3 and S4 sound, that is also called gallop sound. Provide adequate rest period, rest period, and assess the form of the self-care activity. Assess the sign and symptom of CHF, congestive heart failure. Next nursing diagnosis, that is activity intolerance related to restlessness, fatigue. So for this nursing intervention are assess the ability of the client to perform the activity of daily life, assess the patient need for assistant device, degree of ability to perform, degree of ability which is performed by client, degree of ability which is performed by the client, and help the people closest to identify the risk of hazard that may arise, minimize the sources of hazard, minimize the sources of triggers. Another nursing diagnosis, that is deficient knowledge related to disease condition. For this nursing intervention, first is assess the level of knowledge of the patient, educate the patient about the disease condition, treatment, pericardiocentesis, and encourage the patient to ask the question about the disease condition and the care and the prevention. Another nursing intervention, first one is assess the level of consciousness that may indicate the cerebral perfusion. Provide the supplemental oxygen as ordered. Initiate 2 large bone intravenous line for fluid administration to maintain the feeling pressure. Pharmacological therapy may include dobutamine to enhance the myocardial contractility and decrease the peripheral vascular resistance. Monitor the patient for dysrhythmia. Coronary artery laceration. Surgical intervention to identify the repair the bleeding site, to evacuate or to remove the clot in the mediastinum. Mediastinum means the space between the 2 lungs, and to resect or open the pericardium to relieve the pressure.
So thank you.